At a time when two governments in the northeast, Mizoram and Nagaland, had formally opposed the centre's decision to withdraw free movement regime from the Indo-Myanmar border, Arunachal Pradesh has welcomed the decision. Chief Minister Pema Khandu, while interacting with the media during a program at Longding on Saturday, said that the Arunachal Pradesh government welcomes the Union Home Ministry's decision. However, the government will put up suggestions so that a mechanism can be chalked out so that the people from either side can continue with their age-old relationship. It might be mentioned that State Minister Honchum Nagadam had earlier requested the Chief Minister to take up the matter with the centre so that a mechanism can be devised which will enable the people to continue with their age-old relationship from either side of the Indo-Myanmar border in case the border is fenced. ये एक वैलिड सजेशन है क्योंकि यहाँ के लोगों का भी कुछ परिवारजन वहाँ पे बर्मा में है, म्यांमार साइड में है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो अभी बॉर्डर को म्यांमार बॉर्डर को फेंस करने का जो डिसीजन है उसको तो मैं हमेशा वेलकम करता ही हूँ, मगर अभी क्योंकि फैमिली कुछ वहाँ पे है तो एक रेगुलेटेड वे में प्रॉपर मतलब गेट के थ्रू से हो या एक माध्यम बना के एक रेगुलेटेड थ्रू से FMR जो है फ्री मूवमेंट रिजिम का है किस प्रकार से होना है, अभी आने वाला दिनों में हम भारत सरकार के साथ में हम जरूर चर्चा करेंगे।